ये यूनिट है यूनिट नंबर 3 और यूनिट का नाम है एफएम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन फॉर सिग्नल टू। तो दिस इज द यूनिट। ये यूनिट को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। पहला वीडियो होगा जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे: एंगल मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एनबीएफएम, डब्ल्यूबीएफएम एंड बेसल्स फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड थर्ड वीडियो में हम टेक्निक्स पढ़ेंगे फॉर एफएम जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये है फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो ये सही से पढ़ना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये वीडियो का बेसिस उस पे होगा। तो प्लीज इसको सही से ध्यान में रख के सॉल्व कर। तो फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन के दो पार्ट होते हैं: फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम दो वे में डिवाइड कर सकते हैं, एनबीएफएम, डब्ल्यूबीएफएम। पर डब्ल्यूबीएफएम का जो बेसिस होता है वो होता है बेसल्स फंक्शन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ये वीडियो में कवर करेंगे। उसी के साथ जो भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, वो भी हम ये वीडियो में कवर करेंगे। So what is angle modulation? Angle modulation gets divided in two parts. One is the phase modulation, other is the frequency modulation. So if I talk about a carrier signal, what is the expression for a carrier signal? T of t is equal to AC cos 2 pi fct plus phi c of t. So the fc is the frequency of the carrier signal and phi c of t is the phase of the carrier signal. And m of t is equal to am cos 2 pi fmt. So this is the carrier signal, this is the message signal. Now, what do you mean by phase modulation? So there are two parts of angle modulation: the phase modulation and the frequency modulation. So the phase modulation is a modulation in which the phase of the carrier signal varies instantaneously with change in amplitude of message signal. So, agar this is my frequency, so this is my phase, right? This is the phase of the carrier signal. So if this phase of the carrier signal varies with change in the amplitude of message signal, it is called as phase modulation. So similarly, what is frequency modulation? Frequency modulation में क्या होता है कि अगर frequency of the carrier signal varies with that of your message signal, it is called as frequency modulation. So in this modulation, the frequency of the carrier signal varies instantaneously with change in amplitude of message signal. So अगर मैं ये डायग्राम देखूं, ये होता है मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये होता है मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सो दिस इज माय एम ऑफ टी। एम ऑफ टी मेरा क्या होता है? am cos 2 pi fmt. So this is my m of t, am cos 2 pi fmt. This is my carrier AC cos 2 pi fct. तो व्हाट हैपेंस इज दैट जब मेरा एम्पलीट्यूड हायर पे होता है तो मेरा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है कैरियर सिग्नल। बट जब एम्पलीट्यूड लेस हो जाता है तो उसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाता है ऑफ कैरियर सिग्नल। दैट मीन्स व्हाट? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल varies instantaneously with change in that of your message signal. So if the message signal goes at a high amplitude, the frequency also increases. If the message signal का amplitude कम हुआ तो उसका frequency भी कम हो। So this is about frequency modulation. So I can divide my angle modulation in two types: the phase and the frequency modulation. The carrier signal is this. This is my message signal. Phase modulation में the phase of the carrier varies, and frequency modulation with the frequency of the carrier varies. But with what? With the amplitude of message signal, and this is the graph for frequency modulation. Okay, so that was the first topic that we learned about angle modulation. The next topic is about phase modulation. So let us understand that in detail. Phase modulation. So this is a university question.
wherein they have asked about phase modulation. So phase modulation, the first point you can write is about the definition. So in this modulation, the phase of the carrier signal varies instantaneously with change in the amplitude of message signal. Now I'll mention some of the equations. Please make a note of this equation. Understand the parameters in them. That will help you to solve the numericals in the next video. So we have C of t, which is given as AC cos 2 pi FCT plus phi of t, right? So this is the carrier signal equation. AC cos 2 pi FCT plus phi of t. This is the carrier signal equation. So since we are talking about phase modulation, we'll talk about phi of t. So phi of t can be written as Kp into m of t. What is Kp? Kp is basically the phase deviation constant. Kp is the phase deviation constant. तो phase modulation में हम क्या करते हैं? C of t is equal to AC cos 2 pi FCT plus phi of t. Since we are talking about phase modulation, we'll concentrate on this part, phi of t. Phi of t is equal to Kp into m of t. Therefore, Kp क्या हो सकता है? Phi of t upon m of t. Phi of t can be written as radians. Message can be written in terms of volts. So that is my Kp. So Kp is equal to phi of t upon m of t, which is given as radians per volts. So that has to be understood very clearly. So अगर phase modulation पे question आया in the paper, please make it a point that you are writing about the definition firstly very well. And what is the definition? Definition of phase modulation is, in this modulation, the phase of the carrier signal varies instantaneously with change in the amplitude of the message signal. And this is a mathematical expression in which phi of t can be written as Kp into m of t, and Kp is equal to phase deviation constant. Kp is equal to phi of t upon m of t radians per volt.